Once, there was a country called Frutistan, the land of apple eaters and orange eaters. I checked your friend's book post and I didn't like what you wrote about orange eaters. And I saw yours and I can say the same thing about you. I don't think you know much about orange eaters. And you're a PhD in apples. छेड़ कैसी बात कहते रूठ जाते हैं रिया एक हंसी हर वक्त हो इनको मनाने के लिए यहाँ भी वही मर्दानगी हम मर्द हैं हसीन औरतें हमें मनाएं मैं लाडली बोल रही हूँ ठीक है ना मैं लाडली बोल रही हूँ काट रही थी फोन मैं 2-3 दिन से बिजी थी लंबी सी गोरी सी मैं ही हूँ This rather odd-looking bird is more endangered than the tiger. It's being persecuted and poisoned. An army of women with the help of biologist Purnima Burman is turning the tide. Can they save the greater adjutant stork from extinction? एक दिन हमारे गांव में किसी ने नहाने का सावर रख दिया My name is Rama Khandwala and I was born in Rangoon in the year 1926. My grandfather was responsible in bringing Mahatma Gandhi from South Africa to India. If today Sabarmati Ashram is there, it is because of my grandfather. ગણપતિ પણ એમ છે ગણપતિ ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યો છે માએ જણ્યો નથી ચારણને શક્તિએ ઉત્પન્ન કરેલો છે आईटी के बारे में पापा ही बोलते हैं थोड़ा थोड़ा मतलब उनको भी देना था तो उनका हुआ नहीं था एक मेढक टाइप के थे कुएं में मेढक वाले यहाँ पे आया तो पता चला यार और भी मेढक भाऊ पुढल्या परीक्षेत मी पहिल्या दिनात आलो ना तर मला 1 वर्ष स्पेनला जाऊन पिकासोच्या घरात चित्रकला शिकण्याची संधी मिळणार आहे जन्माला येणारे सगळे फक्त संघर्ष घेऊन येतात कालही मी संघर्षच करीत होते आजही करते आणि पुढेही जीवनात मला संघर्षच करायचा आहे അവനോടൊന്ന് സംസാരിക്കണമായിരുന്നു ഫോനൊന്ന് കൊടുക്കുവോ ഈ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരായിട്ട് നല്ല രസത്തിലല്ല ತುಳುವನಾಡುದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಆ ಕುಡಿಯಡಿಟ್ಟು অন্ধবিশ্বাস দূৰ কৰক ডাইনী হত্যা বন্ধ কৰক এইখন গাঁৱত ধৰ্ম কৰ্ম ৰীতি নীতি নাই বুলি ভাবিছে Masalah kelamin lang. Baka yodo ka ng kang. Magbigay ng karamdam na nalaro. Tadaw ang mga soang piru. क्या करेगी आगे बढ़ के अरे करना तो तूने वही चूल्हा चौका है अपने मकसद को हर हाल में पूरा कर I promise मैं IPS बन के दिखाऊंगा विनीता जयदेव चौधरी रिपोर्टिंग सो ज्यादा अंदर मत जाओ साहब भूलन है अंदर अब ये क्या है बे भूलन भूलन कांदा साहब भूलन कांदा पाँव के नीचे आज ही ना तो रास्ता भटक जाऊ जाने ನಾನು ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ఆడవా చెప్పు ఆడనవద్దా ఆడు నాన్న నువ్వు ఆడితే చాలా బాగుంటుంది హీరోలా అనిపిస్తావు நம்ம கிட்ட காடு இருந்தா எடுத்துக்கிடுவானுவ ரூபா இருந்தா புடிங்கிக்கிடுவானுவ படிப்பை மட்டும் நம்ம கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிடவே முடியாது சிதம்பரம் இந்த மாதிரி தைரியசாலி எப்பமாவது ஒருத்தன் தான் பிறப்பான் அவனை பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் புத்திசாலி ਰਾਜੀ ਗੀਤ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਦੇ ਛੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ
ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ। ꯑꯗꯨ ꯕꯥꯕꯨ ꯏꯗꯣꯅ ꯄꯥꯏꯔꯝꯕ ꯀꯥꯡꯖꯤꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯡꯖꯤꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ? ക്യാമറ കടയിൽ നിന്ന് സിനിമ പിടിക്കാനായിട്ട് എടുത്തു അല്ലയോ? The huge S of thermodynamics. फक्त मध्ये कायम एक बारड असतो. तुझी या गावात काय गरज ना? क्या हम इस साल जीसी जीत सकते हैं? यस! साले लूजर्स, अबे लूजर होगा तेरा बाप। ইনক্রেশন নেতাজির মৃত্যু হয়নি। আপনার তো মশাই চিত্রনাট্য করা উচিত ছিল। कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। విసురుతుంటే బాణాలు గడ్డి పరకపై అగ్గి పుల్లలా భగ్గుమన్నవే నా కళ్ళు. ఈ యుద్ధం మన జయికి. तुमच्या कुटुंबास असं ख्रिस्ती शाळेत जाता यायचं नाही. धर्माविरुद्ध जाल तर हेच परिणाम भोगावे लागतील. आम्ही कसं जगायचं हे ठरवणारे तुम्ही कोण? गोपाळराव तुमचा धिक्कार असो. सारखी धरसोड ही नोकरी तरी करणे. दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का दूसरा प्रधानमंत्री ताशखंड जाता है, वॉर ट्रीटी पर साइन करता है और मर जाता है. सैकड़ों सस्पिशंस होते हैं, लेकिन एक इंक्वायरी कमीशन भी नहीं बैठता है.
এটাকে আপনি পলিটিক্যাল করে দিচ্ছেন মিস্টার ধর। কোন পার্টির মেম্বার আপনি? আমি কোনো পার্টিরই ক্যাডার নই পালবাবু, আমি আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক। নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই, নাকি তার জন্য আরেকটা কমিশন বসাবেন? আমার এটা দেশের বাড়ি না, এটা আমার বাড়ি, এটা আমার নিজের বাড়ি। এই বল্লভপুর হচ্ছে আমার গ্রাম, এই বল্লভপুরের মাটি হচ্ছে আমার মা, আমার রক্ত। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। उस दिन शास्त्री जी को थर्मस में दूध किसने दिया था? क्या उसमें जहर था? Shastri died of a heart attack. Everything else is a lie. சரி, எங்கே இருப்போம்னு அவன் நினைக்கிறப்போ அந்த கொடி மெல்ல அவனை வளைச்சு அவனை இருக்குன்னா அந்த கொடி மலைப்பாம்புன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா மன்னிப்பு 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 मैं लक्ष्मी बाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। जय, तुम्हें लग रहा है कि तुमने भोपाल की लड़कियों को रगड़ दिया तो तुम इंडियन टीम में कमबैक कर सकती हो? कोशिश तो करने दे यार, फिर से पंगा लेना। हमारे शहीद भाई जन्नत में अपनी जिंदगी के मजे ले रहे हैं। सचिन, बख्शिश लेने के लिए सबके सामने जाना पड़ेगा ना? कितनी बार बोल रहे गोपी, वहां सब होंगे, सब तेरे लिए तालियां बजेंगे, देखना तू। The age-old virtue has a very significant philosophy. Every sentient being has the right to live as per nature's rule. Like Tibetan Buddhists and Monpa people of India, we must realize that all living creatures have feelings. तुम्हाला तिथे शिकायचं असेल तर ख्रिस्ती धर्म स्वीकारण्यावाचून गत्यंतर नाही. I will be Albert and my wife will be Victoria. ज्या देशास माझ्या धर्मासकट मी मान्य नाही, तो देश मला मान्य नाही. कितना बड़ा था? ये इतना बड़ा, वो डिस्कवरी चैनल पे बताते ना, बोलो तो एकदम वैसा. అందుకే ఏ రైతు తన కొడుకుని రైతుని చేయాలనుకోవట్లేదు. ఇప్పటికే మన జనరేషన్కి వ్యవసాయం ఏంటో తెలియదు. ఇంకా రాబోయే జనరేషన్స్కి వ్యవసాయం అనేది హిస్టరీ బుక్స్లో మిగిలిపోతుంది. हेलो, गुड इवनिंग चिकन हब. സോറി സർ, ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക്. അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹെലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ മിസ്സിംഗ് ആണ്. വെയിലും തണലും കാറ്റും വീടും തന്ന് വളർത്തിയ മണ്ണ് ഉമ്മയെ പോലെയാണ്. ആ ഉമ്മാന്റെ നെഞ്ചത്തെ ചവിട്ടണ കാല് അപ്പൊ തന്നെ വിട്ടിയിടുന്നവരെയാണ്
ആനന്ദമെന്ന് വിളിക്കണം. हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि इस वक्त हमारे बीच कुछ ही पलों में हाजिर होने वाले हैं। आप सबसे अनुरोध करते हैं कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। Ladies and gentlemen, once again a request to please keep your phones switched off and please take your seats. सड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो वर्ष 2019 के हैं, आदरणीय अतिथिगण, माननीय उपराष्ट्रपति जिन्हें अब से कुछ देर में यहाँ प्रदान किया जाएगा। माननीय उपराष्ट्रपति, आप सभी से अनुरोध है कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाही तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Ladies and gentlemen, let us now welcome our honorable dignitaries on the dais. The Honorable Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu. Shri Anurag Singh Thakur, the Honorable Minister of Information and Broadcasting, Government of India. Dr. L. Murugan, Minister of State, Information and Broadcasting, Government of India. Shri Apurva Chandra, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. Shri Chaitanya Prasad, Additional Director General, Directorate of Film Festivals. May I now request Shri Apurva Chandra, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, for the welcome speech. Honorable Vice President of India, Shri Venkaiah Naidu ji, respected Minister for Information and Broadcasting,
Shri Anurag Thakur ji, Minister of State for Information and Broadcasting, Shri Murugan ji, respected Dada Saheb Phalke Award winner, Shri Rajnikant ji, jury chairpersons and members and all award winners, ladies and gentlemen. A good morning to you and a very warm welcome to the 67th National Film Awards ceremony. The National Film Awards celebrate the best in the country without any discrimination or distinction. And that is why these are the most coveted and celebrated awards in our country. So I congratulate all the award winners who represent the best in our country and look forward to more from you. During the COVID lockdowns over the past 1.5 years, it is films which sustain us through those dire times. Even though new film releases were deferred, shootings were postponed, and the sector suffered financially, but love for cinematic entertainment in the public and people like us has grown multifold. The country is emerging from the lockdowns, and this award festival itself is being held after a gap of 1.5 years. But we are now witnessing a huge desire to make up for lost time amongst the public, हमारे जैसे श्रोताओं में और आपके जैसे लोगों में जो कि सिनेमैटिक कंटेंट बनाते हैं. The National Awards endeavor to encourage films showcasing aesthetic and technical excellence and social relevance, contributing to the understanding and appreciation of cultures of different regions of the country in cinematic form. The medium of cinema has a great role in promoting unity and integrity of the nation. Today, India has come together to celebrate the Azadi Ka Amrit Mahotsav, which commemorates 75 years of our independence. And we recognize the role of a film fraternity, which over the years have used storytelling and entertainment to weave a uniquely diverse Indian story. The identity of India in the world was and is through the films, since much before the software engineers have also started sharing some of the limelight. Later this week, on the 31st of October, India marks the Rashtriya Ekta Divas in honor of Sardar Vallabhbhai Patel on his birth anniversary. He envisaged a united India, which we recognize today as Ek Bharat, Shresht Bharat. In this spirit, the National Film Awards give equal recognition to regional languages. Awards have been given to a total of 18 regional languages in the feature film category this year, which include Khasi from Meghalaya, Mishing from Assam, Paniya from Kerala, and Tulu from Karnataka. The awards also recognize the efforts made towards promoting film production by the state governments by giving Most Friendly Film State Award. And this year the award has been given to Sikkim, a state which is known for its scenic beauty. हम लोगों को सबको अपने देश पे और अपने जो सीनिक लोकेशंस हैं, जो स्टेट्स हैं, उन पे गर्व है और आप सबसे यही आह्वान है कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग करें. India is a hub of talent, and today we see the best of the country in this hall. I extend my congratulations to you all, and also to Dada Saheb Phalke winner Shri Rajnikant ji for his outstanding and eternal contribution to Indian cinema. He has generated billions of Indian cinegoers for generations and has now become more of a legend on social media, much beyond the films. So, in the end, I offer my congratulations to all the award winners of the 67th National Film Awards, and मेरा
आखिरी में यही आह्वान है कि आप लोग ऐसे ही अपनी फिल्में बनाते रहें, हमारा मनोरंजन करते रहें और देश की गरिमा सब जगह बढ़ाते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद श्री अपूर्व चंद्रा जी। माननीय अतिथिगण, अब 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का वितरण प्रारंभ करते हैं। We begin. The award for the most film-friendly state is given to a state government to acknowledge its efforts towards the ease of doing business in respect of film shootings by filmmakers from India and across the globe, and for creating a conducive environment towards the promotion of Indian cinema. The recipient for the award this year is Sikkim. पुरस्कार वितरण कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले माननीय राष्ट्रपति जी और मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथिगण से विनम्र अनुरोध करते हैं, कृपया मंच पर आगे आएं। माननीय उपराष्ट्रपति जी के साथ हैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन। सबसे पहला अवार्ड सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य को दिया जा रहा है और ये अवार्ड दिया जा रहा है सिक्किम को। रजत कमल ग्रहण कर रहे हैं सिक्किम के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्री लोकनाथ शर्मा। The award is given to the state of Sikkim for the efforts undertaken by it to develop Sikkim into a filming state despite their limited resources, as well as encouraging skill and talent development. अब सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए दिए जा रहे अवार्ड्स का रुख करते हैं। शुरुआत करते हैं विशेष उल्लेख से। इस वर्ष सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन की श्रेणी में 2 पुस्तकों को विशेष उल्लेख के लिए चयनित किया गया है। श्री अशोक राणे द्वारा लिखित मराठी पुस्तक सिनेमा पाहनारा माणूस, इन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। The author is given a special mention for the manner in which he encapsulates a lifetime of passion for cinema and the medium's many dimensions and presents it in a highly engaging style. डॉक्टर पी.आर. रामदास नायडू द्वारा लिखित कन्नड़ा पुस्तक कन्नड़ा सिनेमा जागतिक सिनेमा विकासा प्रेरणे प्रभावा, इन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। The author gets a special mention for the wide range of book covers and the way it juxtaposes the global with the local and implies the revolutionary interactions between the two. सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक के लिए स्वर्ण कमल की विजेता हैं सोहिनी चट्टोपाध्याय जी। For the lucid and incisive manner in which she examines linkages between Indian cinema and society. अब बारी है गैर फीचर फिल्मों के पुरस्कारों की। शुरुआत करते हैं सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के पुरस्कार से। पुरस्कार के विजेता हैं हिंदी फिल्म क्रांतिदर्शी गुरुजी अहेड ऑफ टाइम्स के संगीत निर्देशक श्री विशाख ज्योति, इन्हें रजत कमल। For enhancing the visual graph and viewers' experience by creatively using ensemble music. सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी की श्रेणी में संगीतमय फिल्म राधा के री रिकॉर्डिस्ट फाइनल मिक्स ट्रैक श्री ऑलविन रेगो एवं श्री संजय मौर्य को रजत कमल। पहले पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री ऑलविन रेगो, इन्हें रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। अब मंच पर श्री संजय मौर्य, इन्हें भी रजत कमल। For superbly enhancing the mood of the film in situations giving life to animated characters.
सर्वश्रेष्ठ लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट श्रेणी में हिंदी फिल्म रहास के लोकेशन पर साउंड रिकॉर्डिस्ट श्री सप्तऋषि सरकार को रजत कमल दिया जाता है। For creatively capturing the on-location sound of the performance by Ras actors, musicians, and the ambience that draw the audience into the spectacle. सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी श्रेणी में हिंदी फिल्म सौंसी के लोकेशन पर कैमरा पर्सन सविता सिंह जी को रजत कमल दिया जाता है। For creating surrealistic images, mood, and tenor, creating time and space in an abstract manner. सर्वश्रेष्ठ निर्देशन श्रेणी में इंग्लिश बांग्ला फिल्म नॉक 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 के लोकेशन पर निर्देशक सुधांशु सरिया को स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है। The film brings out psychological barriers of an old man who protects himself like castling on a chessboard in the most intricate manner. पारिवारिक मूल्यों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मलयालम फिल्म ओरू पाथीरा स्वप्नम पोले को रजत कमल। फिल्म के निर्माता हैं सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान। पुरस्कार ग्रहण करने आ रहे हैं श्री प्रसन्नजीत घोष। फिल्म के निर्देशक हैं श्री शरण वेणुगोपाल, इन्हें भी रजत कमल। For beautifully crafting the underlying complexities of a mother-daughter relationship. सर्वश्रेष्ठ लघु काल्पनिक फिल्म श्रेणी में हिंदी इंग्लिश फिल्म कस्टडी की निर्माता एवं निर्देशक अंबिका पंडित को रजत कमल प्रदान किया जाता है। The film sensitively presents relationships and conflicts not often visible on the surface, yet you can smell the smoke. निर्णायक मंडल के विशेष पुरस्कार के विजेता हैं इंग्लिश फिल्म स्मॉल स्केल सोसाइटीज के निर्देशक विपिन विजय, इन्हें रजत कमल। For creating mesmerizing visuals representing the cycle of life, dream and reality through archaeological articles that transport viewers to a fantasy world. सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार दिया जा रहा है संगीतमय फिल्म राधा को। पुरस्कार ग्रहण करने आ रही हैं संगीता चौधरी जी। इस फिल्म के निर्माता हैं फेरी काउस, इन्हें भी रजत कमल। फिल्म राधा के निर्देशक हैं श्री बिमल पोद्दार, इन्हें भी रजत कमल। फिल्म राधा के एनिमेटर हैं श्री नितिन खारका, इन्हें भी रजत कमल प्रदान किया जाता है। A superbly crafted animation film for its interesting concept and execution in terms of the poetic relationship between an old woman and a boy who exist in each other's subconscious. सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्म यानी बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव फिल्म के लिए मराठी फिल्म जक्कल को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता हैं नियॉन रील क्रिएशन। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री प्रतीक सुरेंद्र जोशी। इस फिल्म के निर्देशक श्री विवेक वाघ को भी रजत कमल दिया जाता है। For presenting a documentary like a thriller
a replay of an investigation of a murder mystery through interviews and the interplay of visuals associated with the killing of innocent people. सर्वश्रेष्ठ पर्यवेक्षण यानी बेस्ट एक्सप्लोरेशन फिल्म के लिए इंग्लिश फिल्म वाइल्ड कर्नाटका को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता और निर्देशक श्री अमोघ वर्षा JS, इन्हें रजत कमल। फिल्म वाइल्ड कर्नाटका के सह निर्देशक श्री कल्याण वर्मा को भी रजत कमल। फिल्म के सह निर्देशक श्री शरद चंपति को भी रजत कमल। Awarded for breathtaking visuals and other cinematic elements that take viewers on a stunning journey, very insightful of wildlife and animal behavior. सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक फिल्म के लिए इंग्लिश फिल्म एप्पल्स एंड ऑरेंजेस के निर्माता LXL आइडियाज प्राइवेट लिमिटेड को रजत कमल दिया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री सैयद सुल्तान अहमद। इस फिल्म के निर्देशक रुखसाना तबस्सुम जी को भी रजत कमल। The film, metaphorically, with a narrative of conflict and friendship between two teenage girls, brings out with a touch of humor. इस वर्ष सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में 2 फिल्मों को रजत कमल से सम्मानित किया गया है। हिंदी फिल्म होली राइट्स पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं प्रियंका प्रदीप मोरे जी। इस फिल्म के निर्देशक हैं फरहा खातून जी, इन्हें भी रजत कमल प्रदान किया जाता है। For a narrative that encompasses multiple aspects of women's subjugation in a section of our society, and that appeals to our conscience. एवं हिंदी फिल्म लाडली पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं इस फिल्म के निर्देशक और निर्माता श्री सुदीप्तो कुंडू, इन्हें रजत कमल। The film very sensitively portrays the struggle and pain of a young woman who is fighting against biological odds and the attitude of society which questions her sexuality and gender. पर्यावरण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म द स्टॉक सेवियर्स को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता राजीव मेहरोत्रा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग ट्रस्ट हैं। इस फिल्म के निर्देशक श्री अजय बेदी को रजत कमल दिया जाता है। With stunning visuals, the film promotes conservation of critically endangered birds through an ongoing crusade involving women in the community. द स्टॉक सेवियर्स फिल्म के सह निर्देशक श्री विजय बेदी को भी रजत कमल प्रदान किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ प्रोत्साहन देने वाली फिल्म के लिए हिंदी फिल्म द शार्क को रजत कमल। इस फिल्म के निर्माता लिटिल लैम्ब फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड हैं। पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं मिस मोनालिसा मुखर्जी। For innovatively underscoring the imbalance in the usage of water between the urban and rural populace without sermonizing. फिल्म के निर्देशक हैं श्री बौद्धायन मुखर्जी, इन्हें भी रजत कमल प्रदान किया जाता है।
सर्वश्रेष्ठ कला एवं सांस्कृतिक फिल्म के लिए उड़िया फिल्म श्री क्षेत्र रू सहिष्णुता को रजत कमल पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक श्री आशुतोष पटनायक। For infusing traditional folk theatre with a blend of spirituality in a colorful portrayal that leaves viewers spellbound. इस वर्ष जीवनी पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए इंग्लिश फिल्म एलिफेंट्स डू रिमेंबर एवं सर्वश्रेष्ठ मानव जाति विज्ञान संबंधी यानी बेस्ट एथनोग्राफिक फिल्म के लिए गुजराती फिल्म चरना अथ विद द सेंस ऑफ बीइंग अ नोमैड को रजत कमल पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं स्मिता वत्स शर्मा जी। दोनों फिल्मों के निर्माता हैं फिल्म्स डिवीजन। माननीय एलिफेंट्स डू रिमेंबर के तीनों निर्देशकों को पुरस्कृत किया जा रहा है। निर्देशक स्वाति पांडे जी को रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। अब मंच पर निर्देशक विप्लव राय भाटिया जी, इन्हें रजत कमल। एवं निर्देशक मनोहर सिंह बिष्ट, इन्हें भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। This is for portraying the power of a patriotic spirit of an ex-soldier of the Indian National Army. चरना अत्व द सेंस ऑफ बीइंग अ नोमैड के निर्देशक हैं दिनाज कलवोचवाला जी, इन्हें रजत कमल। Awarded for a well-researched and informative profile of a nomadic tribe, their beliefs, livelihood, music, language, and aspirations. निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म के लिए रजत कमल दिया जा रहा है मराठी फिल्म खिसा को। इस फिल्म के निर्माता है पीपी सिने प्रोडक्शंस और लाल लाल टिप्पा फिल्म्स। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री संतोष मेथानी। फिल्म के निर्देशक हैं श्री राज प्रीतम मोरे, इन्हें भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। Awarded for narrating a heart-wrenching story depicting that the loss of innocence of a child is ironically symbolic of the present times. सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म के लिए हिंदी फिल्म एन इंजीनियर ड्रीम को स्वर्ण कमल पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं फिल्म के निर्देशक और निर्माता श्री हेमंत गाबा। For an intensely compelling portrayal of middle-class aspirations, a convoluted education methodology, and the emotional and psychological pressure on teenage children to fulfill their parents' expectations. सर्वश्रेष्ठ संपादन श्रेणी में हिंदी इंग्लिश फिल्म शट अप सोना के संपादक श्री अर्जुन गौरी सरिया को रजत कमल दिया जाता है। Awarded for keeping the right pace and editing punches that elucidate the bold yet nuanced profile of Indian woman and her struggles for seeking equal space in modern India. With this, all the awards for non-feature films stand awarded. I now request the Honorable Vice President and all dignitaries present on stage to please be seated. अब मैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर एल मुरुगन को संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। Honorable Vice President of India, respected Sri Venkaiah Naidu ji,
Honorable Minister of Information and Broadcasting, respected Sri Anurag Singh Thakurji, winner of Dada Sahib Palke Award, Sri Rajinikanth, Secretary of our department, Sri Apurva Chandraji, juries, chairpersons and members, all the award winners, dignitaries, guests, ladies and gentlemen, namaste, vanakkam. It gives me a great pleasure to welcome you all to the 67th National Film Awards. I congratulate those who winning the awards. They are coming here. I congratulate, courteous congratulations to you. Dear National Film Award winners, you are all the best creative minds in the field of movies and movie making. You have made us proud. Congratulations to all of you for the awards. Friends, we Indian like storytelling. Our epics, our Puranas, our folk music and folk tales entertains us with plots and drama. With the movie Raj Hari Chandra, our cinema too joined in this rich tradition. People like Dada Sahib Palke, Prithviraj Kapoor and others consolidated it. The great N.T. Ramarao brought alive Lord Rama and Krishna on silver screen. Gradually, socially important themes were explored, the stories and struggles of our society, and particularly the fishermen were brought to life on silver screen by the Purachi Thalaivar Dr. MGR, and in his movies Menavan Anban, Padagoti and Madurai Veeran, etc., etc. The valor and patriotism of heroes of freedom struggles like Vavu Chidambaram Pillai and Veerapandi Kattabomman was played with a force in movies like Kappalottiya Tamilan, Veerapandi Kattabomman by the legendary Sri Shivaji Ganesanji. Hindi movies, along with movies produced in all other languages, enriched the Indian cinema. Many actors, directors, producers immensely contributed in growing the stature of Indian cinema. Indian cinema not only shaped our aesthetic taste and experience, it also connected all of us with the feeling of oneness from Kashmir to Kanyakumari. These 135 awards in 21 languages reflect a wide range of themes. Films like Marakkar, Otta Seruppu, Helen, Asuran, and Engineering Dreams, Hisa, Magresi, and all other award-winning entries are truly reflective of this diversity. Films made in languages like Paniya, Tulu, Missing, Kasi, Monpa show how keenly our friends want to tell their stories in their languages. I am happy to note that our government focuses on setting up campus of film training institute at Itanagar also will further assist these efforts. Our dynamic and visionary Prime Minister Sri Narendra Modi ji has always highlighted the important role played by the cinema, our Indian cinema. Under his leadership, our efforts for a single window facilitations for international and domestic film producers, our step to preserve cinematic heritage through National Museum are going into the right direction. Friends, before I conclude, I once again congratulate all award winners and also countless those who were involved in the making of the award-winning movies. I commend film fraternity for showing a strong resilience during the challenge time of COVID-19. I'm confident that with the brilliant creative minds that you are, the stories of our villages and cities, stories from our great rich literature will be made as showcased. In this Azadi Ka Amrit Mahotsav, stories of our unsung heroes will find a global viewership through our movies. Together we will
We all will work to make Indian cinema a force to reckon with all the world level. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Bharat Mata ki Jai. माननीय डॉक्टर एल मुरुगन, आपके संबोधन के लिए आपका आभार. We will now honor the award recipients for the feature films category. I would like to request the Honorable Vice President, Shri M. Venkaiah Naidu ji, to kindly present the remaining awards. माननीय अतिथिगण, इस वर्ष फीचर फिल्म ज्यूरी ने 4 फिल्मी हस्तियों का विशेष उल्लेख किया है जिन्हें प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं. पहला विशेष उल्लेख मराठी फिल्म पिकासो के निर्देशक श्री अभिजीत मोहन वारंग का किया गया है. इन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है. The director interestingly portrays the life of a struggling folk artist and his son aspiring to enter a world-renowned painting school against the backdrop of popular folk theatre Dasavatar. दूसरा विशेष उल्लेख मराठी फिल्म लता भगवान करे के लिए अभिनेत्री लता भगवान करे जी का किया गया है. इन्हें भी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है. A powerful portrayal of the real story This is the powerful portrayal of the real story of Lata Kare, struggling for survival on the one side and at the same time venturing to running and winning the Baramati Marathon at the age of 67. तीसरा विशेष उल्लेख असमिया फिल्म जोनाकी पोरुआ के लिए श्री बेंजामिन देमारी का किया गया है. इन्हें भी प्रमाण पत्र. A sensitive portrayal of a young man struggling to find his sexual identity. चौथा विशेष उल्लेख मलयालम फिल्म बिरयानी के लिए श्री साजिन बाबू का किया गया है. इन्हें प्रमाण पत्र दिया जाता है. A powerful portrayal of a vibrant Muslim woman victimized by her society and her unique revenge. अब हम संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक भाषाओं से हटकर अन्य भाषाओं में बनी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्मों को सम्मानित करेंगे. सर्वश्रेष्ठ तुलु फिल्म के लिए फिल्म पिंगारा को रजत कमल प्रदान किया जाता है. फिल्म के निर्माता DMR प्रोडक्शंस. पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री अविनाश यू शेट्टी. तुलु फिल्म पिंगारा के निर्देशक श्री आर प्रीतम शेट्टी हैं. इस विशेष अवसर पर निर्देशक श्री आर प्रीतम शेट्टी को भी रजत कमल. The film poetically and sensitively reveals how innocent people fall prey to blind faith circulated intentionally by the rich and powerful. सर्वश्रेष्ठ पनिया फिल्म के लिए फिल्म कंजीरा को रजत कमल दिया जाता है. इस फिल्म के निर्माता नेहरू फिल्म्स हैं. निर्देशक है श्री मनोज काना. इन्हें रजत कमल. A straightforward narration of the Paniya tribe, its struggles, humiliations and helplessness. सर्वश्रेष्ठ मिशिंग फिल्म के लिए फिल्म अनुरुवाद को रजत कमल दिया जाता है. इस फिल्म के निर्माता ओबोनोरी पिक्चर्स हैं. निर्देशक है श्री दिलीप कुमार डोले. इन्हें रजत कमल. A realistic narration of schematic witch hunting and unfortunate child deaths among the Mishing people. सर्वश्रेष्ठ खासी फिल्म के लिए फिल्म यूडो को रजत कमल दिया जाता है. इस फिल्म के निर्माता शिवन आर्ट्स हैं. निर्माता की तरफ से पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री शंकर लाल गोयंका. फिल्म के निर्देशक श्री प्रदीप कुरबाह को भी रजत कमल प्रदान किया जाता है. A wonderful portrayal of a collage of characters in Judo
stressing on a community living with human values. सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म के लिए फिल्म छोरियां छोरों से कम नहीं होती को रजत कमल दिया जाता है। इस फिल्म के निर्माता जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड और सतीश कौशिक एंटरटेनमेंट हैं। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री सतीश कौशिक। फिल्म के निर्देशक श्री राजेश अमरलाल बब्बर को भी रजत कमल प्रदान किया जाता है। The film entertainingly emphasizes the importance of education and equality for a girl child. सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ी फिल्म के लिए फिल्म भूलन द मेज को रजत कमल दिया जाता है। इस फिल्म के निर्माता स्वप्निल फिल्म प्रोडक्शंस हैं, निर्देशक हैं श्री मनोज वर्मा, इन्हें रजत कमल। The story of the plant Bhulan Kanda is told in a metaphorical way which addresses the present corrupt judicial system. अब हम संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक भाषा में बनी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्मों को सम्मानित करेंगे। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म के लिए फिल्म जर्सी को रजत कमल दिया जाता है। इस फिल्म के निर्माता सितारा एंटरटेनमेंट्स हैं। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री सूर्य देवरा नागा वामसी। फिल्म के निर्देशक श्री गौतम तिन्ना नूरी को भी रजत कमल दिया जाता है। This is a strong portrayal of the life and struggle of a cricketer to fulfill his unfinished dream. सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म के लिए फिल्म असुरन को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता हैं वी क्रिएशंस। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं एस थानू। फिल्म असुरन के निर्देशक श्री वेट्री मारन को भी रजत कमल प्रदान किया जाता है। A beautiful narration of life in a remote village, their rivalries, consequences, and finally conveying the message that only education can counter treachery and social malice. इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म के लिए रजत कमल 2 फिल्मों को दिया गया है। पहली फिल्म है कलीरा अटीटा। इस फिल्म के निर्माता है एलिनोरा इमेजेस प्राइवेट लिमिटेड, निर्देशक श्री नील माधव पांडा। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री नील माधव पांडा जी। A realistically short, touching tale of a schizophrenic poor man fighting with his past tragedies. दूसरी सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म है साला बुढ़ार बदला। इस फिल्म के निर्माता न्यू जनरेशन फिल्म्स। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री कुमार सी देव मोहपात्रा। और निर्देशक डॉक्टर सब्यसाची मोहपात्रा, इन्हें रजत कमल। An entertaining and musical tale of sweet revenge between 2 warring tribal villages. सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म के लिए फिल्म इगी कोना को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता लुवांग अपोक्पा ममिपकोल प्रोडक्शन। पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं के सुशीला जी।
के निर्देशक श्री मैपक्साना हाउरंगबम को भी रजत कमल दिया जाता है। A thrilling film revealing the present plight and conditions of polo players and ponies in their place of origin. सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म के लिए फिल्म कल्ला नोट्टम को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता फर्स्ट प्रिंट स्टूडियोज पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री लिजो जोसेफ। और फिल्म के निर्देशक श्री राहुल रिजी नायर को भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। An experimental portrayal of the realities of life where the exploitation of women and blackmail is captured through a single lens. सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म के लिए फिल्म बार्डो को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता ऋतु फिल्म्स कट LLP हैं। पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं ऋतुजा गायकवाड़ जी। फिल्म के निर्देशक श्री भीमराव मुडे को भी रजत कमल प्रदान किया जाता है। An engaging story of a moralistic play which unravels the message that what is good for one is good for all. सर्वश्रेष्ठ कोंकणी फिल्म के लिए फिल्म काजरो को रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। फिल्म के निर्माता डिगोन स्टूडियो पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री राजेश आर पेडनेकर। और फिल्म के निर्देशक श्री नितिन भास्कर को भी रजत कमल दिया जाता है। A touching story of an underprivileged man who is banished from his village. सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ा फिल्म के लिए फिल्म अक्षी को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता कला देगुला स्टूडियो हैं। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री श्रीनिवास वी। और निर्देशक श्री मनोज कुमार को भी रजत कमल दिया जाता है। A heart-wrenching presentation of the struggle of a rural boy to promote eye donation. सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए फिल्म छिछोरे को रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। फिल्म के निर्माता नाडियाडवाल ग्रैंडसन्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड फॉक्सस्टार स्टूडियोज। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री साजिद नाडियाडवाला। और फिल्म छिछोरे के निर्देशक श्री नितेश तिवारी को भी रजत कमल। The film brilliantly showcases that just winning or losing is not the crux of life, but earnest and sincere efforts to reach the goal are. सर्वश्रेष्ठ बांग्ला फिल्म के लिए फिल्म गुमनामी को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता SVF एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड हैं। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री महेंद्र सोनी। फिल्म के निर्देशक हैं श्री श्रीजीत मुखर्जी। इन्हें इस फिल्म की पटकथा लेखन के लिए भी रजत कमल प्रदान किया जाता है।
The director went through a series and layers of interviews and incidents unfolding the mystery surrounding the controversial disappearance and death of Netaji Subhash Chandra Bose. सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म के लिए फिल्म रोनुवा हु नेवर सरेंडर को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता बोरनाली क्रिएटिव विजन एंटरटेनमेंट। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री सुनील दत्ता। और निर्देशक श्री चंद्रा मुदोई को भी रजत कमल दिया जाता है। For the brilliant weaving of scenes and sequences in the film, through the protagonist conveying that life should go on as usual, irrespective of tragedies. I now request the Honourable Vice President and all dignitaries present on stage to kindly be seated. And we welcome Shri Anurag Singh Thakur, the Honourable Minister of Information and Broadcasting and Sports and Youth Affairs, for his address. माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री एम वेंकैया नायडू जी, माननीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री श्री एल मुरुगन जी, सूचना प्रसारण विभाग के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी, मंच पर उपस्थित सभी ज्यूरी के अध्यक्ष मेंबर्स, दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता श्री रजनीकांत जी, उपस्थित सभी फिल्म जगत के से जुड़े हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सूचना प्रसारण मंत्रालय के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि हम 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन के साथ साथ सिनेमा का उत्सव भी मना रहे हैं। और शायद बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब एक साथ सारे सितारे यहाँ पर आते हैं। आप सब आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय उपराष्ट्रपति जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर आज आप सबको सम्मानित करने का निर्णय भी लिया। कोविड-19 पैंडेमिक ने देश और दुनिया के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां ली और ये भी एक बड़ा कारण था कि उसके कारण विलंब हुआ कार्यक्रम, कुछ महीने नहीं, लगभग 1 साल से ज़्यादा। लेकिन खुशी इस बात की है कि उन सब चुनौतियों को पार करते हुए भी जहां एक और भारत ने अपनी वैक्सीन भी बनाई और 100 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगाने का काम भी किया है और आज हम सब इकट्ठे मिल पाए हैं, वर्चुअली नहीं फिजिकली आपको सम्मानित करने का निर्णय किया गया है। आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार और सम्मान माना जाता है और आज आपको उससे सम्मानित किया जा रहा है। मैं आप सभी को आपके द्वारा किए गए कार्यों पर, जिससे आपने न केवल मनोरंजन बल्कि मैसेजिंग का भी एक बड़ा काम किया है, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये पुरस्कार फिल्म निर्माण की असाधारण कला का सम्मान करते हैं और जिनकी देश भर के प्रतिभाशाली हमारे व्यक्ति हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, उनके द्वारा रचना की जाती है और उनको यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाता है। मैं जूरी मेंबर्स का भी आभार प्रकट करता हूं क्योंकि देश भर की सैकड़ों पिक्चरों के बीच में से
आपके काम को चयनित किया जाता है। ये भी एक बहुत मुश्किल कार्य है, आप सबने किया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन सभी फिल्म निर्माताओं का भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने फिल्म निर्माण का सार्वभौमिक कला के माध्यम से हमें हमारी संस्कृति, परंपरा, मुद्दों और भावनाओं से जोड़ने का काम किया है। इस अवसर पर अगर मैं कहूं कि प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, उसके विजेता रजनीकांत जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। माई हार्टफेल्ट congratulations to Mr. Rajnikant on being awarded as the prestigious दादा साहब फाल्के अवार्ड। वैसे तो 5 दशक सिनेमा जगत के देते देते आप कहेंगे वेटरन होंगे, कोई कहेगा आइकॉनिक कलाकार हो गए। मैं तो कहता हूँ ये 5 दशक ने उनको इंडिविजुअल से एक इंस्टीट्यूशन के रूप में बदला है। वो अपने आप में एक संस्था है। एंड दीज 5 decades, I'll say 5 Ds: discipline, determination, dedication, dialogue and delivery. And you have done so. It is not humanly possible to sustain for such a long period and one after another giving such successful films. You have done a fantastic job. Our heartfelt congratulations to Shri Rajnikant ji. और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपसे पहले बाकियों को सम्मानित किया जा रहा था तो कोई भी हो, किसी भी दृष्टि से उसको किसी भी काम के लिए अवार्ड किया जा रहा था, रजनीकांत जी हो, धनुषी हो या फिर मनोज वाजपेयी जी हो, बाकी हो, इनके हाथ किसी के लिए तालियां बजाने से नहीं रुके, क्योंकि सब एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे। और सब जानते हैं पूरा तभी हो पाता है जब सबके कार्य की प्रशंसा की जाए, और आपने सबको यहाँ पर बैठे हुए यहाँ पर करने का काम किया। हमने विभाग की ओर से फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस का भी स्थापना की है। एफएफओ ने एक प्रयास किया जाता है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, आप देश भर में कहीं पर भी अपने शूटिंग करना चाहते हो, आपको उसकी अनुमति मिले और आपको सहयोग दिया जा सके ताकि देश और दुनिया भर के डायरेक्टर्स यहाँ पर आकर शूटिंग कर सकें। हिंदुस्तान एक अपने आप में एक ऐसी भूमि बनी है आपके प्रयासों से, आपके सब पिछले कई वर्षों के कामकाज के कारण, कि आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग यहाँ पर आकर फिल्म प्रोडक्शन करना चाहते हैं, शूटिंग करना चाहते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन का कामकाज यहाँ पर करना चाहते हैं। And I think whereas on one side the COVID-19 pandemic has thrown a lot of challenges not only to India but to the entire world, on the other hand we have seen a lot of opportunities during this pandemic time. I personally feel India has all the potential to become the content subcontinent of the world. दुनिया का कंटेंट अगर कहीं पर बन सकता है, फिल्म निर्माण से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन से लेकर एनिमेशन, विजुअल, ग्राफिक्स से लेकर बाकी सब की बात करें, एक बहुत बड़ी संभावनाएं देश के अंदर खड़ी होती हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम उसको फैसिलिटेट कैसे करते हैं, हम उनको एम्ब्रेस कैसे करते हैं, हम उनको साथ में जोड़कर कैसे दुनिया भर के काम को यहाँ पर ला सकते हैं। एक बहुत बड़ा अवसर हम सबके सामने है। जब बड़े पर्दे पर फिल्में दिखनी बंद हो गई थी तो बड़े पर्दे वालों ने भी छोटे पर्दे पर दिखाकर बहुत बड़ा काम करने का काम किया है। एक नई संभावनाएं खड़ी हुई। मनोज जी बैठे हैं, द फैमिली मैन। मैं तो यही कह सकता हूं, कई बार तो नेट सीरीज पे कहां क्या क्या चल रहा था। पैंडेमिक के टाइम पे भी आपने लोगों को व्यस्त रखा, बाकी सब ने, आपने किसी का मनोबल नहीं गिरने दिया, आपने मनोरंजन करने का काम किया है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान आपका पैंडेमिक के समय रहा। इसके लिए भी आप सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। लेकिन मैं कई बार सोचता हूं उस व्यक्ति का क्या जो सिनेमा के बाहर लाइन लगाकर आपका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए खड़ा होता था। सही मायने में तो वो आपके फिल्मों के बारे में जागरूकता भी फैलाता है, चर्चा भी करता है, रेवेन्यू भी देता है,
और आपको बड़ा स्टार भी बनाता है। ये मनोरंजन के साथ साथ मैसेजिंग का जो बड़ा काम आप करते हैं कि समाज से जुड़े हुए विषयों को उठाकर उनका उत्तर क्या हो सकता है, उस पर चर्चा क्या हो सकती है, आप जन जन के बीच में ले जाने का काम करते हैं। कई बार जो न्यूज़ नहीं कर पाती वो जनरल एंटरटेनमेंट के माध्यम से, उसके कंटेंट के माध्यम से हम लोग कर पाते हैं। इसलिए क्या कंटेंट आप चुन रहे हैं, कैसे उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके ऊपर अपने आप एक बहुत बड़ा काम, एक जिम्मेदारी आपके ऊपर है समाज के निर्माण के लिए और समाज की कुरीतियों को दिखाकर उसके उत्तर क्या हैं उसको दिखाने के लिए। और बहुत सारी पिक्चर्स के माध्यम से वो देखने को मिलता है, हालांकि मुझे कम पिक्चरें देखने को मिलती हैं, लेकिन मेरा फिर भी मानना यह है कि जो लोग फिल्म देखने के लिए सिनेमा तक आते हैं, क्या आप उन तक जा पा रहे हैं? आज एक आदमी के लिए 4 लोगों के परिवार को या 5 लोगों के परिवार को फिल्म दिखाने के लिए थिएटर तक जाना हो, उसका कितना खर्चा एक पिक्चर देखने के लिए आता हो, कितने करोड़ लोग उसको देख पाते होंगे। जो बड़े ऑडियंस हैं या बाकी आपके जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ थिएटर्स बने हैं, वो आम आदमी की रीत से बाहर हो जाते हैं। क्या हम भविष्य के लिए ऐसा भी सोच सकते हैं कि आपका जो शानदार काम है उनको महंगे थिएटर्स के अलावा भी टियर 2 सिटीज़, टियर 3 सिटीज़ और बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में किसी हॉल में, बिल्कुल सिंपल हॉल में भी जाकर दिखाकर, क्यों नहीं हो सकता कि 10,000 स्क्रीन्स पे एक ही बार जाके कुछ दिखता हो? या आपने पहले दिन यहाँ पे दिखाया, 10 दिन 15 दिन में जब यहाँ पर कुछ हो गया, इंडोर स्टेडियम्स हैं, स्पोर्ट्स हॉल्स हैं, बाकी सब हैं, अगर हम वहाँ पर एक बार में वो सिस्टम लगा देते हैं, बहुत महंगा नहीं भी लगाते, और नॉर्मल सीटिंग कर देते हैं। हमने तो बचपन से वैसे फिल्में देखनी शुरू की थी, तब भी उसमें उतना ही आनंद आता था जितना आज बड़े बड़े हॉल्स में आता है। बहुत सारे लोगों ने टेंट्स में देखने का काम किया होगा। सवाल ये है कि आपके शानदार काम को हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके बारे में हमें बड़ी गंभीरता से सोचना होगा। अगर वैक्सीन लगाने के लिए गरीब और अमीर के अंतर को नहीं देखा गया, वैक्सीन अमीर को भी मिली, गरीब को भी मिली, तो मनोरंजन के ऊपर भी गरीब और अमीर का उतना ही हक है। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। अमीर की शायद ताली कम बजे, लेकिन गरीब के पास ताली भी और बड़े दिल की कमी नहीं होती है। ये आपकी फिल्मों में भी देखने को मिलता है। और जब 67 वर्ष की हमारी एक कलाकार इस मंच पर आई, तो शायद किसी ने किसी और के लिए इतनी तालियां ना मारी हो जितना उस महिला कलाकार के लिए आपने तालियां मारने का काम किया। बड़े से बड़ा कलाकार भी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर उनके सम्मान में कर रहा था। ये आपके फिल्म जगत की एक बहुत बड़ी विशेषता है। एक परिवार के रूप में आप लोग जो काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका बेस्ट क्रिएटिविटी उसको बाहर लेकर आती है। और आपकी ये बेस्ट क्रिएटिविटी बेस्ट कंटेंट में कैसे हो, और उस कंटेंट को सिनेमा के माध्यम से हम कैसे जन जन तक ले जाने का काम करें, मुझे लगता है आप वो जरूर करेंगे। और आज़ादी के 75 वर्ष जब हम मना रहे हैं, तो मेरा प्रयास ये रहेगा भारत सरकार की ओर से 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, ऐसे 75 रचनात्मक लोग जो कल भविष्य के हमारे ऐसे डायरेक्टर्स होंगे, कोई स्क्रिप्ट राइटर होगा, कोई किसी और भूमिका में होगा, सिनेमाटोग्राफर होगा, तो डिपेंड ये करता है कि उसमें किस बात की प्रतिभा है। हम आज़ादी के 75 वर्ष में जहां एक और 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में मना रहे हैं। ये हाइब्रिड मोड में होगा, वर्चुअल और डिजिटल दोनों होगा। दुनिया भर के कलाकार, फिल्म निर्माता उस पर आए होंगे। उस समय मेरा प्रयास यह है कि जब मास्टर क्लास हो रही होगी, तो ये उन युवाओं के लिए भी हो जिनके अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरी है, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता। अवसर मैं उनको उस मंच से दिलाने वाला हूं। उन 75 क्रिएटिव माइंड्स को चुनकर देश भर हम उनको चुनकर लाएंगे। उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था से लेकर उनकी मास्टर क्लास से लेकर उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जहां पर वो साजिद नाडियावाला से भी मिल सकेंगे, नितेश तिवारी जी से मिल पाएंगे, मनोज जी से जैसे बाकी कलाकारों से मिल पाएंगे, आप जैसे बड़े
डायरेक्टर फिल्म प्रोड्यूसर से मिल पाएंगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर बड़े और छोटे की कोई दूरी ना, जहां पर एक बहुत प्रसिद्ध और एक बिल्कुल नए के बीच में उस जो गैप है उसको कम किया जा सके। हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि वो हो सके। फिल्म जगत के लोगों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ब्रांड इंडिया को बड़ा करने का काम आप लोग करते हैं। सॉफ्ट पावर के रूप में हमारी फिल्म इंडस्ट्री को देखा जाता है। आप भारत की छवि को दुनिया भर में कैसे दिखाना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी हुनर को दुनिया भर ने जाना है, इसलिए पोस्ट प्रोडक्शन भी यहां पर होती है, शूटिंग भी यहां पर होती है। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर जो अच्छे टैलेंट की बात हो या फिर एक ऐसी मैन पावर की बात हो जो स्किल्ड भी है, उपलब्ध भी हो। मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा था पीछे जब माननीय योगी जी से मिलने गया, उनके मन में कल्पना है कि उत्तर प्रदेश को एक बड़ा फिल्मों का हब बनाया जाए, जहां पर आकर आपकी फिल्म की शूटिंग हो, प्रोडक्शन हो, पोस्ट प्रोडक्शन, वहां पर कामकाज हो। जहां एक और बड़ा राज्य ये सब करने का काम कर रहा है, वहीं पर एक छोटे राज्य सिक्किम को आज अवार्ड भी मिला है। और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड के लिए मैं सिक्किम को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमें आज माननीय उपराष्ट्रपति जी को सुनना है और हम सब चाहेंगे कि उनका जो अनुभव है उससे सीखकर हम सब लोग अपने कामकाज में उसको प्रदर्शित भी करें और देश के लोगों का मन मनोरंजन के माध्यम से जहां एक और हम लूटें भी। क्योंकि ज़्यादातर फिल्म को देखा जाता है जब हम लोग किसी भी सिनेमा हॉल में जाते हैं, जैसे जैसे रोशनी कम होती चली जाती है, स्क्रीन पर कुछ दिखना शुरू होता है, ऐसा लगता है सब कुछ जीवंत हो गया, कुछ नया होना शुरू हो गया। और आपकी रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी के कारण लोग उसमें कहीं ना कहीं इतना खो जाते हैं कि जितना उनको शायद कोई और बांध नहीं पाता। तो मैं चाहता हूं आपकी रचनात्मकता, आपकी क्रिएटिविटी एक अच्छे कंटेंट के माध्यम से देश के जन जन तक पहुंचे। इसलिए जहां आप लोग प्रयास करेंगे, किसी उचित समय पर मैं भी आपके साथ बैठूंगा और समझूंगा कैसे हम उन लोगों तक पहुंचे जिनके लिए आज गांव का मेला भी एक बहुत बड़ा साधन है, लोगों से मिलने के लिए, मनोरंजन के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, परिवार के साथ आउटिंग के लिए। क्या उसी तरह से हम वीकेंड उनके लिए कैसा दे सकते हैं जहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने स्टॉल्स लगाकर अपने कामकाज को दिखाएं, लोकल कलाकार बाहर बैठकर अपने प्रदर्शन करें और सिनेमा हॉल के अंदर आपकी शानदार पिक्चर कोई चल रही हो। एक परिवार के लिए क्या वीकेंड हम ऐसा बना सकते हैं जहां स्थानीय कलाकार से लेकर आप जैसे बड़ा कलाकारों का कामकाज हम उन तक पहुंचाएं। उस दिशा में अगर हम कुछ कर सकें तो मुझे लगता है 130 करोड़ भारतीयों तक आपके कामकाज को पहुंचाने में कोई कमी नहीं रहेगी। एक बार फिर आप सबको आपके शानदार काम के लिए बहुत बहुत बधाई और माननीय उपराष्ट्रपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। Thank you, sir. और अब हम पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू तथा अन्य गणमान्य अतिथिगण को पुरस्कार वितरण के लिए आमंत्रित करती हूँ। फीचर फिल्म श्रेणी में बाकी पुरस्कार दिए जा रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन के लिए कन्नड़ा फिल्म अवने श्रीमन नारायणा के एक्शन निर्देशक श्री विक्रम मोर को रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। For the brilliant design and execution of fights in a most realistic way. सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के लिए तेलुगु फिल्म महर्षि के नृत्य कला निर्देशक श्री राजू सुंदरम को रजत कमल। For creating completely new and eye-pleasing dance steps while taking the story forward. सर्वश्रेष्ठ स्पेशल इफेक्ट्स के लिए मलयालम फिल्म मरक्कार अरविकड़लिंडे सिम्हम के स्पेशल इफेक्ट क्रिएटर सिद्धार्थ प्रियदर्शन को रजत कमल।
for the realistic exposition of various effects to create a natural feel for the backdrop of the movie. निर्णायक मंडल का विशेष पुरस्कार तमिल फिल्म वोत्त सिरुपु साइज 7 के निर्माता एवं निर्देशक राधा कृष्णन पार्थिबान को दिया जाता है। इन्हें रजत कमल For telling the story innovatively about the confessions of a poor man's crime. It intensifies the narrative through its enactment and well-designed sounds and voices which are not seen on screen. सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए मलयालम फिल्म कोलांबी के गीतकार श्री प्रभा वर्मा को रजत कमल प्रदान किया जाता है। For the perfect blend of poetry and emotions to create the required effect. संगीत निर्देशन में 2 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जा रहा है। पहली श्रेणी सर्वश्रेष्ठ पार्श्व संगीत निर्देशक श्री प्रबुद्ध बैनर्जी को बांग्ला फिल्म ज्येष्ठो पुत्रों के लिए रजत कमल। For the subtle scoring of background music which elevates the performance and storytelling. दूसरी श्रेणी गीतों के सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक श्री डी इम्मान को तमिल फिल्म विश्वासम के लिए रजत कमल प्रदान किया जाता है। For blending the rendition of the voice with musical instruments to create a pleasing atmosphere in the film. सर्वश्रेष्ठ मेकअप कलाकार के लिए मलयालम फिल्म हेलेन के मेकअप कलाकार रंजीत अंबडी को रजत कमल दिया जाता है। For creating gradual changes in the face and body of the lead character, even in adverse and unfavorable conditions. सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर की श्रेणी में मलयालम फिल्म मरक्कार अरविकडेलिंडे सिम्हम के कॉस्ट्यूम डिजाइनर श्री सुजीत सुधाकरण एवं श्री वी साई को रजत कमल। पहले मंच पर श्री सुजीत सुधाकरण। अब पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर आ रहे हैं श्री वी साई। For creating and designing costumes of diverse cultures for the characters and period in the film. सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन की श्रेणी में मराठी फिल्म आनंदी गोपाल के प्रोडक्शन डिजाइनर श्री सुनील निगवेकर को रजत कमल दिया जाता है। इसी फिल्म के लिए पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री नीलेश वाघ। इन्हें रजत कमल। For recreating late 19th century Maharashtra and its British lifestyle through its location choices, properties, enabling us to dive into the period reality. सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए तेलुगु फिल्म जर्सी के संपादक श्री नवीन नूली को रजत कमल दिया जाता है। For maintaining a seamless flow of the scenes and cricket. सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जा रहा है। फाइनल मिक्स ट्रैक के री रिकॉर्डिस्ट इस श्रेणी में तमिल फिल्म वोत्त सिरुपु साइज 7 के लिए श्री रसूल पुकुट्टी और श्री बिबिन देव को रजत कमल। पहले पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री रसूल पुकुट्टी। इन्हें रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। अब मंच पर आ रहे हैं श्री बिबिन देव। इन्हें रजत कमल।
for meticulously planning and balancing the various soundtracks to elevate the mood of the film. सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी की दूसरी श्रेणी साउंड डिजाइनर। इस श्रेणी में मराठी फिल्म त्रिज्या के लिए साउंड डिजाइनर श्री मंदार कमलापुरकर को रजत कमल। For designing all required sound in the film and ensuring proper execution of the same. तीसरी श्रेणी लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट। इस श्रेणी में खासी फिल्म यूडो के लिए लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट श्री देवजीत गायन को रजत कमल प्रदान किया जाता है। For brilliant work in capturing the natural sound of characters and the atmosphere in a dingy, crowded marketplace. इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ पटकथा की श्रेणी में 2 लेखकों को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। फिल्म द ताशकंद फाइल्स के संवाद लेखक श्री विवेक रंजन अग्निहोत्री। For writing apt dialogues for convincing arguments of members of the committee that was formed to find out the facts about the mysterious death of Sri Lal Bahadur Shastri. और बंगाली फिल्म ज्येष्ठों पुत्रों के पटकथा लेखक श्री कौशिक गांगुली। For capturing the complexities of human relations in a broken family, slowly unraveling the jealousies and insecurities within the family in an unhurried pace, but keeping the audience intrigued. सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू के सिनेमेटोग्राफर श्री गिरीश गंगाधरन को रजत कमल। For the brilliant picturization of long night sequences where frantic locals chase a wild bull in a forest without compromising the beauty of the night and forest. सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका की श्रेणी में मराठी फिल्म बार्डो की गायिका सावनी रविंद्र जी को रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। For a heart-wrenching rustic rendition of a grieving mother. सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक की श्रेणी में हिंदी फिल्म केसरी के गायक श्री बी प्राक को रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। For a very soulful recitation of a patriotic song. सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार श्रेणी में तमिल फिल्म KDA करुपुदुरई के बाल कलाकार मास्टर नागा विशाल को रजत कमल। For his absolutely outstanding performance as a realistic orphan street boy becoming a guide and savior to an almost abandoned old man in the film. सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री के लिए हिंदी फिल्म द ताशकंद फाइल्स की अभिनेत्री श्रीमती पल्लवी जोशी को रजत कमल। For her subtle but stubborn performance as a disabled historian in a controversial jury process. सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के पुरस्कार के लिए तमिल फिल्म सुपर डिलक्स के अभिनेता श्री विजय सेतुपति को रजत कमल प्रदान किया जाता है। For his challenging and convincing performance as a transgender. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हिंदी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी एवं हिंदी फिल्म पंगा के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत जी को रजत कमल दिया जाता है।
For the outstanding performance as the legendary Jhansi Ki Rani in the film Manikarnika and the depiction of a middle-aged mother coming back to sports facing all odds in the film Panga. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए माननीय जूरी ने 2 अभिनेताओं को चुना है। पहले अभिनेता हैं श्री धनुष। इन्हें तमिल फिल्म असुरन में इनके अभिनय के लिए पुरस्कृत किया गया है। इन्हें भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। For the versatility in carrying out the role of a young rebel and later as a sobered father figure in the film. दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं श्री मनोज बाजपेयी। इन्हें हिंदी फिल्म भोसले में उनके अभिनय के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। इन्हें रजत कमल। For the powerful portrayal of a brain cancer patient and sacrificing his life to uphold a woman's dignity against evil. सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए हिंदी फिल्म 72 हूरे के निर्देशक श्री संजय पूरन सिंह चौहान को स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है। The film questions with cinematic excellence the myth behind 72 Angels in Heaven through an engaging dark comedy. सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म के लिए हिंदी फिल्म कस्तूरी को स्वर्ण कमल। इस फिल्म के निर्माता इनसाइट फिल्म्स पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं डॉक्टर पायल अजय ढोके। फिल्म के निर्देशक श्री विनोद कांबले। इन्हें भी स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है। The wonderful concept which depicts that the dignity of an individual child is more important than the exterior appearance. पर्यावरण संरक्षण परिरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मोम्पा फिल्म वाटर बरियल को पुरस्कार दिया जाता है। फिल्म के निर्माता फारूक इफ्तिखार लस्कर और एएम टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री संजीव नारायण। इन्हें रजत कमल। फिल्म के निर्देशक श्री शांतनु सेन। इन्हें भी रजत कमल दिया जाता है। For excellent cinematic depiction of the cultural adherence of the Monpa community, their rituals, and more importantly, their faith and commitment towards the environment. सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मराठी फिल्म आनंदी गोपाल को पुरस्कार दिया जा रहा है। इस फिल्म के निर्माता जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड, फ्रेश लाइन फिल्म्स एलएलपी और नमा पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड को रजत कमल पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री मंगेश कुलकर्णी। फिल्म आनंदी गोपाल के निर्देशक हैं श्री समीर विद्वंस। इन्हें भी रजत कमल दिया जाता है। For depicting the place of women in late 19th century India and their struggle to achieve the almost impossible in those testing times. राष्ट्रीय अखंडता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त अवार्ड मराठी फिल्म ताजमहल को दिया जाता है। इस फिल्म के निर्माता हैं टाउन लाइन स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर कुलभूषण यशवंतराव मांगले। और फिल्म के निर्देशक श्री नियाज मुजावर को भी रजत कमल दिया जाता है। The film stresses on the concept of love, symbolized by the Taj Mahal, taking over violence in whatever form it appears.
लोकप्रिय एवं स्वस्थ मनोरंजन करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार तेलुगु फिल्म महर्षि को दिया जाता है। इस फिल्म में निर्माता हैं श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री वी वेंकट रमन रेड्डी। फिल्म के निर्देशक श्री पाइडीपल्ली वामशिधर राव को भी स्वर्ण कमल। The concept of the film that ingeniously addresses, through the protagonist, the necessity of our present globally spread youth to get connected to our grassroots culture and encounter the freshly brewed challenges of globalization in the prime area of agriculture. निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मलयालम फिल्म हेलेन को दिया जा रहा है। इस फिल्म के निर्माता बिग बैंग एंटरटेनमेंट्स को स्वर्ण कमल। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री नोबेल बाबू थॉमस। फिल्म के निर्देशक श्री मथुकुट्टी जेवियर को भी स्वर्ण कमल। A highly engaging way of telling the story of a young girl entrapped in a cold storage in the middle of the night and the frantic struggle of a lover and father to locate her. इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए स्वर्ण कमल की विजेता है मलयालम फिल्म मरक्कार अरबी कडलिंडे सिम्हम। इस फिल्म के निर्माता आशीर्वाद सिनेमास को स्वर्ण कमल। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री मालिकुड़ी जोसेफ एंटनी। और फिल्म के निर्देशक श्री प्रियदर्शन को भी स्वर्ण कमल। A grand portrayal of the life of the 16th century historic icon Kundali Marakkar and a dramatic depiction of the multicultural phenomena of our times, human relations, patriotism and valor. अब मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी से अनुरोध करती हूं कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मान्यवर, सिने जगत का सर्वोच्च सम्मान है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इस वर्ष के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता हैं प्रतिष्ठित अभिनेता श्री रजनीकांत जी। आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं रजनीकांत जी के प्रतिभावान फिल्मी सफर की एक छोटी सी झलक। He has a unique way of striking a matchstick, flicking a cigarette, wearing sunglasses that only belong to this style icon of the Tamil film industry. He is Rajinikanth. பார்க்கத்தானே போற இந்த காளியோட ஆட்டத்தை. The human magnet that has attracted and stolen the hearts of not only Tamil film fans, but also millions of film goers in various countries around the world. I love a man who can give me a good fight. Shivaji Rao Gaikwad, aka Rajinikanth, was born on 12th December 1950. Our director K. Balachandar find Rajinikanth was introduced in 1975 in Apurva Ragangal. His first shot in the movie was opening the main gates of a palatial house. Little did he know at that time that he was actually opening the floodgates of the Tamil film industry to become a superstar. Superstar யாருன்னு கேட்டா சின்ன குழந்தையும் சொல்லும் கண்ணே. நான் ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி. One cannot talk of Rajinikanth without mentioning his unique style and charisma. His mannerisms and his trademark walk have been trend-setting and a part of his superstardom. The most amazing thing I learned from
Rajni sir was how he transforms. You don't even recognize him. Then once he puts his makeup and he comes in front of the camera, he just transforms and he just like a lightning. The year 1980 helped him taste stardom with the release of Billa. He never even wanted a makeup van. He never even wanted an extra boy for him. He was there sitting next to everybody. He is there having tea with everybody. He is there always, there is a bench there, he will slide down on the bench, put a wet cloth and sleep there only. Various honors and awards have come his way in his 45-year stint in filmdom. Centenary Award for the Indian Film Personality of the Year, Icon of the Golden Jubilee of IFFI, Padma Bhushan, Padma Vibhushan. திரையுலகில் வந்து தீர்க்கதரிசியாக இன்றைய கிட்டத்தட்ட 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அவர் முதல் நிலை வகித்து வருகிறார் என்றால் அவருக்கு இந்த விருது சால பொருந்தும். This man really left a very, very lasting impact because, when he did films with Mr. Amitabh Bachchan or, all the other different stars there in Mumbai, he was able to leave a mark for himself. There are very few expressions left in the English dictionary to describe this phenomena of Indian cinema. Rising from extremely humble beginnings to achieve what he has is by itself beyond the extraordinary. The superstar who has genuinely eclipsed all of us with his simple, humble and down-to-earth attitude towards life. My heartfelt thanks to the central government for honoring me with the most prestigious Dada Saheb Phalke Award. I dedicate this award to my mentor, K. Balachandra sir, my producers, directors, my film fraternity, and all the fans. மற்றும் என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வங்களான தமிழ் மக்கள். दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने के लिए माननीय उपराष्ट्रपति जी से विनम्र आग्रह कि कृपया मंच पर आगे आएं। और मैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ग्रहण करने के लिए श्री रजनीकांत जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। स्वर्ण कमल प्राप्त कर रहे हैं श्री रजनीकांत जी। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान भारतीय फिल्म उद्योग में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए श्री रजनीकांत जी को दिया जा रहा है। रजनीकांत जी वो अभिनेता जिनके काम ने दर्शकों का न सिर्फ मनोरंजन किया बल्कि उन पर गहरा असर छोड़ा। उनका सफर शानदार रहा। भारत के सबसे चहेते और लोकप्रिय कलाकारों में से एक हैं श्री रजनीकांत जी। This award is a recognition of Sri Rajnikant's acting skills, evident in various entertaining roles in his career of over 45 years in the Indian film industry. रजनीकांत जी की संवाद अदायगी, स्क्रीन पर दिखने वाला अनोखापन दर्शकों को बेहद पसंद है। वो देश के सिने प्रेमियों को पीढ़ियों से प्रेरित करते आ रहे हैं। सिने प्रेमियों की कितनी ही पीढ़ियां उनसे प्रेरणा पा रही हैं। I now request the Honorable Vice President and all dignitaries present on the stage to kindly be seated, please. और अब मैं सभी सिने प्रेमियों की ओर से माननीय श्री रजनीकांत जी से आग्रह करती हूं कि इस विशेष अवसर पर अपने उद्गार प्रस्तुत करें। माननीय श्री रजनीकांत जी, आपसे अनुरोध कृपया हमारे साथ अपने विचार इस अवसर पर जरूर साझा करें। We request Sri Rajnikant ji to please say a few words. Most respected Honorable Vice President, respected IB Minister, respected Muruganji, dignitaries, all the award winners, good morning to everybody. I'm extremely happy to receive this prestigious award and my heartfelt thanks to Central Government for honoring me with this most prestigious Dada Saheb Phalke Award. I dedicate this award to my mentor, my guru,
K. Balachandra sir. This moment, I remember him with great gratitude. And my brother Satyanarayana Rao Gaikwad, who is like my father, who brought me up with, teaching me with great values and injecting me a spirituality in me. And my friend, a Karnataka bus transport driver, my colleague, Raj Bahadur. When I was a bus conductor, he was the one who identified the acting talent in me and encouraged me to join cinemas. And all my producers and directors who produced my films and technicians who worked in, and co-artists, and all the distributors, exhibitors, the media, press, and all my fans. And Tamil people, without them, I am nobody. என்னை வாழ வைக்கணும் தெய்வங்களான தமிழ் மக்களுக்கு நன்றி. ஜெய் ஹிந்த். बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री रजनीकांत जी, आपके शब्दों के लिए और शब्दों में छिपे एहसास के लिए. May I now request the Honorable Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu ji, to kindly address all present here. Ladies and gentlemen, the Vice President of India. माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर एस मुरुगन जी, सूचना और प्रसारण मंत्री के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी, फीचर फिल्म के लिए जूरी के अध्यक्ष श्री एन चंद्रा जी, गैर फीचर फिल्म श्रेणी के लिए जूरी का अध्यक्ष श्री अनु चड्डा जी, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट श्रेणी के लिए जूरी के अध्यक्ष श्री साजी एन करुण जी, ऑल इंडिया फिल्म एम्प्लॉयज़ कॉन्फेडरेशन के अध्यक्ष श्री अशोक दुबे जी, फिल्म समारोह निर्देशालय के अपर निर्देशक श्री चैतन्य प्रसाद जी, श्री रजनीकांत जी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता, सभी को नमस्कार. सर्वाना नमस्कार. अनेवरिक्कुम वणक्कम. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. అందరికీ నా నమస్కారాలు. सर्वेभ्यः नमस्कारः. ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कारम. बधाने नमस्ते. सत श्री अकाल. सब जन के प्रणाम. हो कुलवै नो नमस्कार. समस्तों को नमस्कार. सभी को नमस्कार. सबको आदाब. तुमका नमस्कार. ओम नमक पू कुरुंजरी. अंदरिकी नमस्कारम. ఎందరో మహానుభావులు इस वर्ष के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित फिल्मकार, निर्देशक, गायक और संगीतकार, कलाकार और टेक्नीशियन बंधुओं, फिल्म जगत से जुड़े अब सभी सम्मानित अतिथिगण, उपस्थिति माननीय अतिथिगण और मीडिया के मित्रों, बहनों और भाइयों, I feel extremely happy to be here amidst you all today to present these national awards for the last 2 years, which could not be held because of the pandemic, COVID, because presenting virtual is not actual.
Virtual is not factual. So you cannot enjoy also. That's why they have delayed it. And now, as the situation is improving, not improved, improving, we are having this function today amidst all of you. And also, we are able to felicitate the winners, the award winners in various categories of the film world, and more particularly the popular star around the world, I can say not only India, Sri Rajinikanth ji, who is honored rightly by the government with the Dada Saheb Phalke Award. And I also would like to greet all the men and women who are watching this program across the country through the medium of various channels. 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के अवसर पर अब सबके बीच में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता है। सबसे पहले मैं इस पुरस्कार के विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं उन सभी लोगों को भी बधाई देता हूं जो इन फिल्मों को निर्माण से जुड़े रहे। I would like to compliment and congratulate all the people, from the light man to the floor sweeper, to the producer, to the director, actors, heroes, heroines, all those people who are responsible for the success of these films. भारतीय फिल्म उद्योग ने विभिन्न भाषाओं में अपनी पहचान बनाई है, चाहे वो भोजपुरी फिल्म हो या तमिल या फिर ओडिया या असमी फिल्म हो, अन्य भाषाओं में भी उल्लेखनीय फिल्में बन रही है। भाषाओं के विभिन्नता के बावजूद सिनेमा की अपनी ही अलग भाषा होती है, जो क्षेत्रीय या सांप्रदायिक सीमाओं से ऊपर है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। विविधता में एकता भारत का विशेषण। We are all Indians, north or south, east or west. India is the best. And we are all proud to be Indian citizens. So we celebrate this industry's success because film industry is one which gives us entertainment, which gives us enlightenment, which gives us encouragement, which makes us feel light when you are heavy with heart. And I can say with all my experience, the cheapest entertainment in the country, in the world for that matter, is cinema. Everything is costly. Right from politics to all other activities, everything is becoming costly. But cinema is not that much costly. Viewing the cinema, producing cinema is costly, I know that. I am not undermining that. Viewing the cinema, entertainment. Even if you don't reach it, it will reach you. Because thanks to the electronic media and also social media. Kanganaji is smiling. Social media means she plays with social media. Social media, one way, is very good, very useful. But at the same time, it is not that much constructive. Sometimes it becomes obstructive and also destructive. It has to correct itself. Otherwise, it will lose its relevance, I can tell. Because people will sooner or realize what is happening in the social media. It's really disturbing. Friends, today, we are felicitating one of the great sons of this great country, Sri Rajinikanth ji.
most celebrated actors from South India, not of South India. Tadaivar rules over millions of hearts and needs no introduction. The iconic thespian's unmatchable style and acting skills have indeed given a new dimension to the Indian film industry. His memorable performances in various films, including Mundru, Muduchu, Shivaji, The Boss, Vairatinai, Bhairavi, stand apart and are a part of popular lore. Tadaivar epitomizes the perfect balance between the artistic expressions and mass appeal, something all young filmmakers here could do well to attempt in future. My dear friends, the National Film Awards mirror the diversity of Indian film industry, an industry that is a confluence of many Indian languages, and they have markets also. Needless to add, each of these languages is unique in behavioral and audience preferences. Therefore, the National Film Award is in a sense a tribute to India's diversity. It fosters and recognizes the talent of India's dynamic subcultures. I convey my compliments to all the members of the jury who have taken pains to go through it and made perfect selections. The Directorate of Film Festivals, as also the Ministry of Information and Broadcasting, for the commendable job they did at every stage of this selection process. Information is very important, and that too, information with confirmation is more than an ammunition. This has to be understood by all. If you give the people right information, correct information, it will be a powerful tool in their hands. That's why the people, the ministry, the people who are all working in the field of communication, they should all remember to pass on the correct information, truthful information. The fact that India is the largest producer of films in the world is an expression of its soft power with a transcontinental footprint. Our films are watched and appreciated across the world, in Japan, in Egypt, in China, and United States, Russia, and Australia, Middle East, and a host of other countries. Films are among our foremost cultural exports, and they are our cultural ambassadors and serve as a key link in connecting the global Indian community to the rhythms of life back home. Sarve jana sukhino bhavantu, vasudaika kutumbakam. Share and care is the core of Indian philosophy. That's why the entire world is looking to India, its philosophy, its spirituality, its way of life. I am not talking of religion. Religion is personal. I am talking of the culture, the way of life, the tradition that have been given by our forefathers who lived for years. And with all their experience, they have given us this rich culture and also these rich traditions. We must preserve, and I appeal to the cinema community to preserve our culture, our heritage, because as I told you, everybody is looking towards India. And we must give our best cultural ethos and values to the people. The best feature film this year, Marakkar, portrays the courageous life events of a rebellious naval chief, Muhammad Ali Marakkar, also known as Kunjali Marakkar IV. Fourth, the historical action-packed films revolves around this heroic figure who is believed to be the first Indian naval commander and was also a freedom fighter in the war against Portuguese. I'm happy to see regional films, I call them national films in fact. All the Indian languages, they are national languages. Unfortunately, we confine them to region. No, it's not correct. All
Indian languages are national languages. That's why I tell my colleagues in Parliament also to treat every Indian language as a national language and not to be carried away by Western culture, not to be influenced by Western mind, because for years we are ruled by foreigners, ruled and ruined by foreigners. They came, they attacked us, they ruled us, they ruined us, they looted us, they cheated us. It's early the better we come out of that mindset and think on the lines of our tradition. The Haryanvi film, Soran say, Kam Nahi Hote, deals with the issue of curtailing freedom in the lives of women and is centered around a girl's struggle to study and become an IPS officer. In Anandi Gopal, we celebrate one of the first Indian female doctors of the Western medicine. Neera Madhav Panda's Budia film, Karira Atita, deals with the issue of raising sea levels due to global warming, a subject of burning importance with universal relevance. Climate change is real. It is happening. We have been ill-treating the climate. We are now learning the lessons of how the climate is reacting and the nature is reacting. That's why I say nature, culture, together for your future, good future. Nature, culture, together for future. Remember this, every one of us has to respect the nature, respect the seas, respect the rivers, respect the air, respect the sun, not your son, the sun. You may love your son, no problem, you should. You can also love your son-in-law also, no problem. But we must love sun, who is giving the real light. Unfortunately, we are avoiding sun, and we suffered in this pandemic. Sun gives you energy. It revitalizes your energy, keep you always healthy. See one small example. In this pandemic, people in the rural areas are less affected. In the urban areas are more affected. We are living in congestion, pollution, tension, no attention. That's the problem in urban areas. So we must go back to our roots and try to live with the sun. Try to be friendly with the trees, forests, and try to be friendly with the water, and try to be friendly with the nature. This is one lesson the teacher, Corona, has taught all of us. Corona is one way a teacher. So we have to understand this. And the film industry also should focus on the importance of nature. Telugu cinema has been a major contributor to the development of Indian cinema. Over a period of more than 100 years, the Telugu film industry has given us many hits, from Pedda Manusulu, the first Telugu movie to win National Film Award under the Best Telugu Film category in the 2017, and Indian war film Gaji. The recent film, Telugu film Jersey, deals with late bloomers who seek to shine in sports, but faces several hurdles. Cinema serves as a powerful medium for the promotion of sports, and the film, I am sure, will serve as a source of inspiration to a whole generation of aspiring young sportsmen. Sisters and brothers, a good film, as you are all aware, has the power to touch the hearts and minds. And this power, which you as filmmakers and artists possess, should be used for the betterment of the people, society and the nation. And you must do it with passion, not fashion, passion. Cinema should usher in positivity and happiness. When you go to cinema, you must come back with happiness, with relief. You should not feel that, oh, headache. And you must be able to remember the cinema. I remember many of the films which I saw in my early ages. Of course, nowadays I don't have
time to go to cinema. If I go to cinema, it is a disturbance to others also. I don't want to cause disturbance. The heroines, I was telling Anurag, there are actors in Telugu, late N.T. Ramarao, Nageswara Rao and many like that. The cinema used to run for 1.5 years continuously. And nowadays we are seeing some of the cinemas coming in the morning, by afternoon half the this thing is over. Next day, new film. We should focus on really building up such cinema which is entertaining, which gives us some message, which gives us solace, which reduces our tension, and which makes us happy, and which makes us to think positively. Positivity is the need of the hour. Negativity is not going to help us. We are an independent nation. We are an independent nation. So whatever we show, whatever we write, should be positive, positive. We must have confidence in our culture, in our generation, in our nation, in our country, in our state. I'm not saying you should support only government and all. If the government does good work, support. If the government does something wrong, criticize. But do not obstruct. Be constructive. That is possible only if you are positive. Positive, not the COVID positive, otherwise positive. Real life positive. Positive is only negative in only one sense, in COVID only. Otherwise, I have not heard anybody talking negatively about positivity. Positive. A film should be a vehicle with a higher purpose, a carrier of social, moral, and ethical message. Moreover, film should refrain from highlighting violence and should voice society's disapproval of social evils. They should totally avoid the use of gross vulgarity and obscenity. Vulgarity and obscenity should be avoided. Yes, Srungara is good. It's part of our culture, Srungara. But at the same time, vulgarity is not part of our culture. A film with a message has a lasting appeal. Our film industry has come a long way from pioneering days of Dada Saheb Phalke technical excellence, sound effects, cinematography, experiments with forms, out-of-box scripts, and excellence both behind and in front of the camera have revolutionized our cinema in the past few decades. It has been a long and enriching journey from the early days of Dada Saheb Phalke to films made in over 40 plus Indian languages and dialects today. Documentaries constitute a key arm of the industry since they deal with critical subjects of relevance. I am pleased to note that the government has played an important role in strengthening the documentary movement in the country. We are living in exciting and transformational times for cinema and for the wider entertainment economy. Technology has changed the way films are made as well as the way they are consumed. With the advent of low-cost data and smartphones, tablets, and addition of OTT platforms, there is a clear shift in viewership patterns. The Indian film industry is adapting to these changes, and I am sure it will continue to devise strategies to convert these challenges. They are a challenge, of course, this technology. But we should convert those challenges into opportunities. Over the years, cinema has become an integral part of our cultural consciousness. I am positive that the focus of Indian film industry would shift gradually towards emphasis on content-driven films, where the story is the hero. The staggering number of films made in different languages in our country every year is a testimony, but not only to the popularity of the film, but also to the fact that the film industry provides livelihood to thousands of families across the country. My dear friends, the cinema industry should not do anything that weakens our great culture, traditions, values, and ethos of our grand civilization. Indian films carry an important message to audience across the world. They should portray a snapshot of
Indianness or Bharatiyata to the outside world and need to be effective ambassadors in the world of cultural diplomacy. Once again, I would like to congratulate all the award winners on their outstanding achievements. I have no doubt that each one of you will excel in your future roles and contribute to the well-being of society, our nation, and the world at large. And finally, I would like to tell everyone, to the younger generation also, Mother, who has given us the beautiful birth. Mother tongue, the language which has come from mother's womb. Motherland, the great country which has given us all these opportunities. No one should forget them. Remember mother, mother tongue, motherland, and try to serve in your own way the motherland. Mother tongue is like your eyesight. The foreign language is like your spectacles. If you have eyesight, spectacles will work. If you don't have eyesight, even if you wear ribbon, zuban se kuch aayega nahi. Remember this and try to promote mother tongue. Feel happy, proud to use mother tongue at home, but also try to learn as many languages as possible, because the world has become small village and we are moving. Opportunities are coming. We are now in an era of openness. Keeping that in mind, we must learn as many languages as possible. Thank you very much. Namaskar. Nandri. Vanakkam. We thank the Honorable Vice President, Shri M. Venkaiah Naidu, for his address to the audience. May I now request Shri Chaitanya Prasad, Additional Director General, DFF, to deliver his word of thanks. Namaskar, good afternoon. Honorable Vice President of India, Venkaiah Naidu sir, Honorable Minister for Information and Broadcasting, Anurag Singh Thakur sir, Minister of State for INB, Dr. L. Murgan, Secretary Information and Broadcasting, Apur Chandra sir, Chairman of the juries of the National Film Awards and members of the jury, Dada Saheb Phalke Award winner Shri Rajnikant ji, 67th NFA award winners in both the feature, non-feature and writing category, President of the Films Associations, ladies and gentlemen. Today we have assembled over here to celebrate the joy of cinema, the magic of moving images, and acknowledge the talent, hard work, and dedication that has gone to make storytelling a unique experience. And this is extremely important in the aftermath of the COVID-19 problem that we faced across the country. And as Honorable Vice President said, it was delayed for nearly 2 years. And hence, we have gathered here physically to celebrate the joy of cinema. Vice President, sir, we are extremely grateful to you for gracing the occasion. Every time, listening to you has been a unique experience. It has been motivational, it has been inspirational, and today it was no less. You have talked of the NFA reflecting India's diversity. You talked of films being the carriers of entertainment, enlightenment, and encouragement. Sir, it was a sure masterclass on filmmaking for everyone present here, including the filmmakers. Thank you very much for taking the time, sir, and being present here today, sir. Honorable Minister Anurag Singh Thakur, sir, you have always guided us, and when we told you that the function was being organized, you said you have to keep up to the highest standards, the institutional standards of the National Film Awards. It should
carry on with the legacy, the continuity, and it should improve as far as filmmaking, presentation, etc. is concerned. Sir, today you gave us a roadmap as to how filmmaking should go ahead. You referred to the 75 creative talent which we intend to invite to the International Film Festival of India to celebrate the idea of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Ladies and gentlemen, I'm sure this is the first in the country. I would request all filmmakers present here for the 67th NFA to kindly back Mr. Thakur's clarion call to make this a unique experience for Creative India in filmmaking. Our MOS, Dr. Murugan, has given us advice as to how we need to go ahead as far as planning the architecture of the National Film Awards is concerned. My secretary, Mr. Apoorv Chandra, ladies and gentlemen, he has been the backbone as far as our function is concerned. All the problems that we had, we faced. He has been the man behind clearing all the obstacles that we faced. A very big thank you to sir for clearing everything that we needed at the right time. We are truly honored by the presence of Rajnikant ji. Anytime we see you, sir, is a unique experience. It's an inspirational experience. Today is a very special moment for you and for us, and we are truly honored to have you amongst us. It has added to the value of the 67th NFA. Thank you very much, sir. To all the award winners, 67th NFA symbolizes the chain between continuity, change, and looking forward. We have young filmmakers that reflect the diversity of India, the matrix of new filmmaking in this country. And we are truly honored to host the entire contingent of the 67th NFA. Thank you very much, and our congratulations to you. The chairman of the 3 juries and the jury members, ladies and gentlemen, they have worked very hard, and most importantly, they came to Delhi when the pandemic was looming large. We know how patiently they listened to us and said, we will do it for you. They came down to Delhi and watched the films physically, keeping into account all the COVID protocols, etc. Without them, it would not have been possible. And all that we have today is a presentation on their behalf, their hard work and dedication. The Films Wing of the Ministry of Information and Broadcasting has been the foundation by how we proceed ahead as far as organization, etc. is concerned. It's a question of lead, kindly light, and they have been absolutely marvelous in leading us forward, along with the media units of the Information and Broadcasting Ministry that have helped us to enhance the outreach of such an institution called the National Film Awards. Without them, it would not have been possible, because today media exists in multiple forms, and in various ways the outreach is taking place. Finally, ladies and gentlemen, I would like to acknowledge the hard work given by my colleagues at the Directorate of Film Festival. We had very little time to organize it, but we believed in the motto of yes, we can. And hopefully, ladies and gentlemen, all our guests who have come here are satisfied, are happy, are motivated to do a next set of films and hopefully win more awards at the 69th or later on NFA. Thank you very much, ladies and gentlemen. It's been a true honor for us for organizing this function, and we hope to see you again. And thank you once again. Namaskar. धन्यवाद श्री चैतन्य प्रसाद जी, और अब आप सबसे अनुरोध कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे
जय हे जय हे जय 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 हे। The 67th National Film Awards were presented in a glittering ceremony here at Vigyan Bhavan. As the Vice President, Shri M. Venkaiah Naidu, takes leave from the plenary hall of Vigyan Bhavan, the ceremony draws to a close. But as Federico Fellini said, there is no ending, there is no beginning, there is only the infinite passion of life. And this infinite passion of life in cinema will endure forever. सिनेमा के सबसे सम्मानित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का समारोह समापन की ओर बढ़ता हुआ। हमारे लिए फिल्में सिर्फ मनोरंजन का हिस्सा नहीं है, वो तो हमारे जीवन का वो किस्सा है जो हम अक्सर सुनते सुनाते रहते हैं। हमें कहानी सुनना सुनाना खूब आता है, तभी तो हम दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में भी बनाते हैं। भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के को स्मरण करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। सभी पुरस्कार पाने वालों को हार्दिक बधाई, धन्यवाद, नमस्कार।
अपने बीच पाकर हमारे बीच माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय श्री मनसुख मंडाविया जी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच पधार चुके हैं माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच पधार चुके हैं माननीय मंत्री माननीय श्री नीलकंठ तिवारी जी, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच पधार चुके हैं माननीय मंत्री माननीय श्री अनिल राजभर जी, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच पधार चुके हैं माननीय सांसद गण, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। माननीय विधायक गण, सभी सम्मानित अतिथिगण यहाँ पर विराजमान हैं, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप आए हमें और क्या चाहिए, एक महफिल सजी और क्या चाहिए, रूप दर्शन विकल थे नयन बावले, आप हैं सामने और क्या चाहिए। हमारे बीच माननीय क्षेत्रीय विधायक भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, सभी का हम स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। आज इस मंच की जानिब से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का शुभागमन बस अब से चंद लम्हों में। साथ होंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनका भी शुभागमन प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदलकर नए क्षितिज पर विकास के नए आयाम गढ़ने वाले उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी अब से चंद लम्हों में हमारे बीच होंगे। सभी ने अपने कार्यों का बखूबी निर्वहन किया है, तभी तो आपको अपने बीच पाकर हम सभी गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं, अभिभूत होते हैं, आह्लादित होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इस नई सोच, नई कार्यशैली, आपके व्यवहार से हम सभी प्रभावित होते हैं और आपको अपने बीच पाकर हम सभी गौरवान्वित महसूस होते हैं। जी जी बताइए, नाम तो बताइए सर। नाम नहीं लिख के दे दीजिए, लिख के दे दीजिए। हमारे बीच माननीय राज्य मंत्री आदरणीय श्री रविंद्र जायसवाल जी भी मौजूद हैं यहाँ पर, आपका भी हम स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। ये एक बहुत ही सुखद अनुभव, मंच पर शुभागमन हो रहा है विश्व मान्य नेता माननीय प्रधानमंत्री माननीय का जोरदार तालियों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है माननीय आपका। दिनों दिन काशी का स्वरूप निखरता संवरता है आपके सानिध्य में। स्वागत, वंदन, अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपका दिल की गहराइयों से विश्व मान्य नेता, सर्वमान्य नेता आज हमारे बीच पधारे हैं। माननीय आपका स्वागत है। माननीय राज्यपाल महोदया माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हमारे बीच हैं, आपका भी। हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच पधारे माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय मनसुख मंडाविया जी का भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और हमारे बीच पधारे सभी सम्मानित अतिथिगण जो मंचासीन हैं, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज की इस